Question number 2, part C, bisection method question है, if of x is equal to cos x plus 1 minus x, इंटरवल हमारे पास है 0.8 to 1.6, where x is in radian. Now, if of x is equal to cos x plus 1 minus x, say this is equation 1. Put initial endpoint of the interval, which is 0.8, put x is equal to 0.8. So if 0.8 is equal to cos 0.8 plus 1 minus 0.8, ये कैलकुलेटर पे सॉल्व करें। cos 0.8 इससे हमारे पास आ जाएगा 0.6967 plus 1 minus 0.8, इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा 1.6967 minus 0.8। अब ये माइनस करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.8967 और ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। So mean if 0.8 is positive, so if 0.8 is positive. Now put x is equal to 1.6 and equation 1, तो क्या आ जाएगा? If of x की जगह लिखते 1.6 is equal to cos 1.6 plus 1 minus 1.6, तो ये साथ है तो आ जाएगा हमारे पास minus 0.0291 plus 1 minus 1.6। अब ये सब ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा minus 0.6291, which is less than 0. Less than 0 means it is negative. So if 1.6 is negative, अब देखिए यहाँ पे if of x का जो साइन है वो यहाँ पे अपोजिट आया, so we use bisection method. Say if of x has opposite sign and the interval 0.8 to 1.6, so the roots line in the interval 0.8 to 1.6. Now midpoint of the interval, midpoint of interval
0.8 plus 1.6 डिवाइड बाय 2। तो क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा 2.4 डिवाइड बाय 2, तो इससे आ जाएगा 1.2। C naught is equal to 1.2. Now first iteration for C naught is equal to 1.2 in equation number 1 हमारे पास है f of x, so f of C naught की जगह लिखिए 1.2, तो क्या आ जाएगा cos 1.2 plus 1 minus 1.2, तो cos 1.2 से हमारे पास आ जाएगा 0.3623 plus 1 minus 1.2, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.1623 which is greater than 0. So if 1.2 is positive, अब हम इसका अपोजिट साइन वाला जो वैल्यू है वो लेंगे, मीन if x जो नेगेटिव हो हम वही वैल्यू लेंगे। देखिए ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे ये हमारे पास नेगेटिव है। Since if 1.6 is negative, so the roots lying in the interval 1.2 to 1.6, because if our base have opposite sign in this interval, so the roots lie in this interval. Now midpoint of the interval is of interval 1.2 to 1.6 is, say this is C1, which is 1.2 plus 1.6 divided by 2, दोनों को ऐड कर तो आ जाएगा 2.8 divided by 2, so we get 1.4. Second iteration for value of C1, which is 1.4 in equation 1, तो क्या आ जाएगा, if x की जगह C1 की जगह लिखिए 1.4, तो 1.4 is equal to cos x की जगह 1.4 plus 1 minus 1.4, cos 1.4 से हमारे पास आ जाएगा 0.1699 plus 1 minus 1.4, तो क्या आ जाएगा
हमारे पास है पॉजिटिव सिंस if 1.2 is positive, so the roots lie in the interval 1.2 to 1.4. Now midpoint of the interval. Now midpoint of interval 1.2 to 1.4 is C2. अब देखिए यहाँ पे हमने if आप 1.2 is positive, अगर आप यहाँ पे देखें तो 0.8 भी हमारे पास पॉजिटिव है, लेकिन हम ये क्लोज वैल्यू लेंगे 1.4 और 1.2 ये बहुत क्लोज है, इसी वजह से हमने ये वैल्यू यहाँ पे लिया है। The midpoint of the interval 1.2 1.4 is, say this is C2, which is equal to 1.2 plus 1.4 divided by 2. We get 2.6 divided by 2, so which is equal to 1.3. C2 is equal to 1.3. Now third iteration for C2 is equal to 1.3 in equation number 1. C2 is equal to 1.3 in equation 1. तो क्या आ जाएगा? If 1.3 is equal to cos 1.3 plus 1 minus 1.3, तो ये आ जाएगा cos 1.3 से 0.2671 plus 1 minus 1.3, तो इससे हमारे पास आ जाएगा minus 0.0325, which is less than 0. So if 1.3 is negative, अभी हमने इसका जो अपोजिट वैल्यू है हमने वो लेना है। तो देखिए यहाँ पे if 1.4 is negative and if 1.2 is positive, since if 1.2 is positive, so the roots lie in the interval 1.2 to 1.3, because if our x has opposite sign in this interval, now midpoint of interval 1.2 to 1.3 is चलेंगे यहाँ पे। Now midpoint of 1.2 1.3 is C3, which is 1.2 plus 1.3 divided by 2, so we get 2
1.25. For this value, this is fourth iteration. Put value of C3. Put C3, which is 1.25 in equation 1. तो आ जाएगा हमारे पास if of 1.25 is equal to cos 1.25 plus 1 minus x की जगह लिखिए 1.25. अब ये कैलकुलेटर के साथ करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.3153 plus 1 minus 1.25. तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.0653 which is greater than 0. Mean if of 1.25 is positive, negative का negative हमारे पास है if of 1.3 and if of 1.3 is negative, so the roots line and the interval 1.25 1.3 बस यहाँ पे खत्म. पार्ट डी if of x is equal to log x minus 5 plus x इंटरवल हमारे पास है 3.2 to 4. देखिए यहाँ पे if of x is equal to log x minus 5 plus x. For x is equal to 3.2. Say this is equation 1. Put x is equal to 3.2 in equation 1. तो क्या आ जाएगा? If 3.2 is equal to log of 3.2 minus 5 plus x की जगह लिखते 3.2. तो क्या आ जाएगा? log of 3.2 से हमारे पास आ जाएगा 1.163 minus 5 plus 3.2. तो क्या आ जाएगा? इससे हमारे पास आ जाएगा minus 0.6368 which is less than 0. So if 3.2 is negative. Now put x is equal to 4 in equation 1. तो हमारे पास आ जाएगा if x की जगह 4 तो आ जाएगा log of 4 minus 5 plus 4. तो क्या आ जाएगा? log of 4 से हमारे पास आ जाएगा 1.3862 minus 5 plus 4. तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.3862 which is greater than 0. Mean if 4 is
positive. Since f of x has opposite sign in the interval 0.3.2, since f of x has opposite sign in the interval 3.2 to 4, so the roots line in the interval 3.2 to 4. Now midpoint of the interval. Now midpoint of interval 3.2 to 4 is, say this is C naught. हमने यहाँ पे मिड पॉइंट इसलिए फाइंड करना है क्योंकि हमारे पास है बाइसेक्शन मेथड. सो मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल इज C naught is 3.2 plus 4 divided by 2, which is equal to 7.2. 7.2 divided by 2, so we get 3.6. So C naught is equal to 3.6. Now first iteration, put C naught is equal to 3.6 in equation 1. So we get f of x की जगह C naught की जगह 3.6 is equal to log of 3.6 minus 5 plus 3.6. तो क्या जाएगा? log of 3.6 से हमारे पास आ जाएगा 1.2809 minus 5 plus 3.6. तो क्या आ जाएगा? इससे हमारे पास आ जाएगा minus 0.1190, which is less than 0. Means if 3.6 is negative. ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव आया. अभी हमने इसका अपोजिट साइन लेना है, मींस पॉजिटिव. तो देखिए यहाँ पे if 4 is positive, तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू लेना है. नो, since if 4 is positive, so the roots line n interval 3.6 to 4. So the midpoint of the interval, midpoint of interval 3.6 to 4
which is equal to 3.6 plus 4 divided by 2, which is 7.6 divided by 2, which is 3.8. So C1 is equal to 3.8. Second iteration, put value of C1, put value of C1 which is 3.8 and equation 1, तो हमारे पास आ जाएगा f of x की जगह 3.8 is equal to log of 3.8 minus 5 plus x की जगह 3.8, तो आ जाएगा log of 3.8 से हमारे पास 1.335 minus 5 plus 3.8, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.1350, which is greater than 0. Means if of 3.8 is positive. अब इसका जो अपोजिट साइन है मींस नेगेटिव, वो हमने लेना है, वो हमारे पास है 3.6. Since if 3.6 is negative, so the roots line and the interval 3.8, 3.6 means 3.8. Now midpoint of the interval, now midpoint of interval 3.6, 3.8 is, say this is C2. Now midpoint of interval 3.6, 3.8 is, say this is C2. So C2 is equal to 3.6 plus 3.8 divided by 2, which is equal to 7.4 divided by 2. 7.4 को 3 plus 6 plus 3.8 इससे हमारे पास आ जाएगा 7.4 divided by 2, so we get 3.7. C2 is equal to 3.7. Third iteration, put C2 which is 3.7 and equation 1, तो हमारे पास आ जाएगा f of x की जगह 3.7 is equal to log of 3.7 minus 5 plus 3.7. Log of 3.7 is equal to 1.3083 minus 5 plus 3.7, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.0083, which is greater than 0.
3.7 is positive. Since if आप नेगेटिव कहाँ पे है वो हमारे पास है 3.6 पे एंड if 3.6 is negative, so the roots lying in the interval 3.6 to 3.7. No midpoint interval 3.6 to 3.7 is, say this is C3. Now midpoint of interval 3.6, 3.4 is, say this is C3, which is 3.6 plus 3.7 divided by 2, इससे हमारे पास आ जाएगा 7.3 divided by 2, 7.3 divided by 2, इससे हमारे पास आ जाएगा 3.65. C3 is equal to 3.65. Now the last one iteration, fourth iteration, for this value of C3 in equation 1, put C3 which is 3.65 and equation 1, तो हमारे पास आ जाएगा f of x की जगह 3.65 is equal to log of 3.65 minus 5 plus x की जगह 3.65 log of 3.65 इससे हमारे पास आ जाएगा 1.2947 minus 5 plus 3.65, तो इससे हमारे पास आ जाएगा minus 0.0552, which is less than 0, means it is negative if 3.65 is negative. So we take other positive value, तो हमारे पास second positive value है 3.7 पे. Also since if 3.7 is positive, so the roots lying in the interval 3.65 3.7 और ये इक्वेशन यहाँ पे खत्म हो।